हेलो पीपल, होप यू वेल। आज हम लोग बनाने वाले हैं लीची आइसक्रीम। आई नो मैंगो इज लाइक एवरीबडीज फेवरेट फ्रूट, बट मेरा एक्चुअली लीची है। So today using lychee, I'm going to show you how to make a super easy but delicious and creamy ice cream. For the first thing, what we'll do is we'll take a frozen whipping cream. हमेशा मेरे पास काफ़ी queries आता है कि why does not my whipping cream whip up properly. The biggest and the best tip that I can give you guys for this is that you guys should start with very cold whipping cream. उससे क्या होता है कि जो जब हम लोग उसको whip करते हैं it holds the air properly and वो melt नहीं होता है. So that's आज का tip. So let's start. I'm going to start whipping it. मेरा जो whipping cream है वो whip हो चुका है अच्छे से and इसके अंदर I'm going to add 100 grams of milk made, condensed milk जो भी हो, Thai made, milk made, anything that you have, 100 grams of that. And फिर इसके अंदर 1 cup of लीची जिसको मैंने प्यूरे कर लिया है उसको भी मैं अंदर डाल दूँगी. See, so nice and creamy. मेरा लीची का जो आइसक्रीम मिक्स है वो तैयार हो चुका है एंड इसको अब मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी ओवरनाइट टू चिल एंड सेट. एंड इफ़ यू वांट यू कैन एक्चुअली ऑल्सो मिन्स सम लीचीज, एकदम छोटे छोटे काट के इसके अंदर आप फोल्ड थ्रू कर सकते हो एंड मे बी यू नो like you can fold through some kind of jam, jelly, something. They all will taste very nice with the lychee. Cool. Now my lychee ice cream is ready to go in the fridge. Lychee ice cream set ho chuka hai. Now it's time to do scoops and I'm going to make a sundae out of it. Oh wow, it's so creamy. एंड उसको डेकोरेट करने के लिए थोड़ा एडिशनल फ्लेवर्स के लिए चेरी एक ऐसा चीज़ है जो लीची के साथ बहुत अच्छा जाता है. यहाँ पे मेरे पास रेडीमेड चेरी जैम था तो मैं उसको डाल रही हूँ एंड इट्स गोना टेस्ट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. थोड़े से फ्रेश चेरीज जिसको मैंने पिक कर लिया है. Of course, wafers. After all, it's Sunday. My lychee ice cream served with a cherry jam with fresh cherries and wafers. Don't forget to make this and don't forget to tag me when you do and send me all the pictures of this when you make it. Bye.